News at 5 is brought to you by Patanjali Honey, Yamaha FZS Air5, Lords of the Streets, and Vimal Ilachi, Bole Zuban Kesari. Massive show of strength by BJP in Tripura as Chief Minister Manik Saha files nomination. NEDA convener Himanta Biswa Sharma accompanies Saha. No single opponent for BJP. Fight constituency level, says the NEDA convener Himanta Biswa Sharma. BJP Parliamentary Board meet on Nagaland polls tomorrow. Party's candidate list to be finalized. BJP workers continue to demand more seats. And party hopping continues in Meghalaya despite release of candidate list. NPP's Rani Kaur candidate Martin M. Dango set to join BJP. And BJP adopts resolution to never ally with Nitish Kumar again. Hello and welcome to News at 5. I'm Priyadarshini Medhi and we begin the bulletin with the top focus from Assam. The all-important Assam cabinet meeting concluded just a short while back. All right, now we cut across live to the press briefing by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma. Listen in. আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ বাহিৰৰ যিখন কেবিনেট বৈঠক সেইখন আজি আমি ডিব্ৰুগড়ত সম্পন্ন কৰোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ কেবিনেটখন আমি ওদালগুৰি জিলাত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মাৰ্চ মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ বাজেট অধিৱেশন আৰু সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি জিলাৰ বাহিৰত কেবিনেট অনুষ্ঠিত নকৰোঁ আকৌ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি জিলাৰ বাহিৰত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু সেই শৃংখলাত এই বিত্তীয় বৰ্ষত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিখন ওদালগুৰিত কেবিনেট হ'ব সেইখনেই এই বিত্তীয় বৰ্ষ বা অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে শেষ কেবিনেট হ'ব ছেপ্টেম্বৰত আমি আকৌ নতুনকৈ কোনোবা এখন জিলাত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিম অহা 10 মাৰ্চৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব চৰকাৰী অধিসূচনাত আমি 8 মাৰ্চ বুলি লিখিছিলো কিন্তু সিদিনাখন হলি সেইবাবে আমি বিধানসভা 10 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু অহা 16 মাৰ্চত ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে 2023-24 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰিব আজি কেবিনেটত সেই ধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আজি কেবিনেটত এটা আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমাৰ ৰাজ্যত এটা ফুলৰ এখন প্ৰকাণ্ড বজাৰ আছে কিন্তু আজি অৰ্কিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ফুল আমি কলিকতাৰ পৰা লৈ আহো বহুত ক্ষেত্ৰত আমি থাইলেণ্ডৰ ফুলো অসমৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু অসমৰ মন্দিৰ বা সত্ৰসমূহ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত এখন ফুলৰ ঘৰুৱা বজাৰো আছে সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা ষ্টেট ফ্লৰিকালচাৰ মিছন এটা গঠন কৰাৰ বাবে আজি অনুমোদন দিছে এই ফ্লৰিকালচাৰ মিছনত আমি 20,000 কৃষকক জড়িত কৰিম আৰু আৰম্ভণিতে আমি প্ৰায় 150 কোটি টকা এই ষ্টেট ফ্লৰিকালচাৰ মিছনৰ বাবে আমি খৰচ কৰিম ধানৰ পিছত মাছৰ পিছত ফুলৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে অসম আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ফালে যাব পাৰে তাৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলক আগতে আমি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট সিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেড এছিষ্টেণ্ট আৰু সুপাৰভাইজাৰী এছিষ্টেণ্ট বুলি কৈছিলো এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ নমেনকালচাৰ সলনি হৈ জুনিয়ৰ ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট সিনিয়ৰ ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড এছিষ্টেণ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট সুপাৰভাইজাৰী হেড এছিষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ
আন কাৰ্যালয়ৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ লগত যাতে তেওঁলোক অলপ পৃথক হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বেছি বানপানীৰ সময়ৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত, সেইকাৰণে আমি সন্মুখত ডিষ্ট্ৰিক্ট শব্দটো লগাই দিছোঁ। আৰু এইটো তেখেতসকলৰ এটা বহুদিনীয়া দাবী আছিলে, আৰু এই দাবীটো পূৰণ হোৱাৰ লগে লগে মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ এটা বহুদিনীয়া দাবী এটা আজি সমাধান হ'ব। আমাৰ ৰাজ্যত আপোনালোকে জানে যে মৈত্ৰী নামে পুলিচ থানাসমূহ আৰু বিভিন্ন পুলিচ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে আমাৰ এখন ছ'চাইটিয়ে কাম কৰি আছে। আজিৰ কেবিনেটে মৈত্ৰী ছ'চাইটিৰ বাবে ৩০০ কোটি টকাৰ অনুমোদন কৰে, আৰু ইয়াৰ ফলত অসমৰ প্ৰতিখন থানা নিৰ্মাণৰ যি আমাৰ প্ৰচেষ্টা আছিলে, সেই প্ৰচেষ্টাই আৰু অধিক বল পাব। আপোনালোকে জানে যে অহা 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব, আৰু অসমৰ বিহুক আমি গ্ৰীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে প্ৰায় 10ৰ পৰা 15,000 বিহু ছোৱালী আৰু ল'ৰাক লৈ, যুৱক যুৱতীক লৈ আমি এটা দৰ্শনীয় বিহু শ্ব' এটা গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিব খুজিছোঁ সৰু সজাই। আজি সেই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজনৰ বাবে আমি এখন সৰু কেবিনেট কমিটি গঠন কৰিলোঁ। কেবিনেটত এই বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনাও হয়। মন্ত্ৰী বিমল বৰা, ৰণোজ পেগু, কেশৱ মহন্ত আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত 4জনীয়া এখন কেবিনেট কমিটিয়ে কাম কৰিব, যাতে 14 এপ্ৰিলত অসমৰ বাপতি সাহোন বহাগ বিহুটোক বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যোৱাৰ যি আমাৰ প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ। আমাৰ ৰাজ্যৰ নতুন উদ্যোগ নীতিলৈও আজিৰ কেবিনেটত দীঘলীয়া আলোচনা হয়, আৰু কেবিনেটে উদ্যোগ বিভাগক যথেষ্ট পৰামৰ্শ দিছে যে আমাৰ ৰাজ্যৰ উদ্যোগ নীতিখন কেনেকৈ হ'ব লাগে। অহা কেবিনেটত আমি ৰাজ্যৰ নতুন উদ্যোগ নীতি এখন গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও যিখিনি পৰামৰ্শ লাগে, সেই পৰামৰ্শখিনি আজি কেবিনেটে উদ্যোগ বিভাগক আগবঢ়ায়। এটা কেবিনেটত আজি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হয়, সেইটো হৈছে যে আমাৰ জিলাসমূহত নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহ আছে। এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টেকনলজিৰ মাধ্যমেদি হয়, অৰ্থাৎ সকলোৱে নিজৰ ঘৰত বহিয়ে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে, আৰু এতিয়া কাৰ্যালয়ত কোনো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত কোনো মানুহ নাযায় এক্সেপ্ট যাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই, আৰু সেই ব্যৱস্থাটো অহা এবছৰৰ ভিতৰত নোহোৱা হৈ যাব, যেতিয়া সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে অচল হৈ গ'ল, কিন্তু নিগেটিভ ৱৰ্ডত নহয়, পজিটিভ ৱৰ্ডত, যে মানুহে ঘৰত বহিয়ে ইয়াৰ সেৱাসমূহ পায়। সেইকাৰণে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ ৱেলফেয়াৰ অফিচলৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে এটা ইন প্ৰিন্সিপল সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ডিটেইলছ কেবিনেটত আহিব। এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰজনৰ দায়িত্ব হ'ব জিলাখনত নিয়োগ মেলা পাতা, বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং কৰা, আৰু বিভিন্ন যুৱক সেৱাসমূহ, ক্ৰীড়াক বাদ দি যুৱক সেৱাসমূহ, সেই যুৱক সেৱাসমূহ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰটোৱে কাম কৰিব। আৰু কাৰোবাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাত কম্পিউটাৰত কেতিয়াবা অসুবিধা হয়, তাৰো তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰিব। কিন্তু মূলতঃ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহ ইতিবাচক কাৰণত এতিয়া অবিকল হৈ যোৱা বাবে আমি তাক জিলা যুৱ কল্যাণ কাৰ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আজি কেবিনেটত বিশেষকৈ এইখিনিয়ে কথা আলোচনা হৈছিলে
আৰু অহা বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত আমাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ যাতে বাজেট এলোকেশ্যনেৰে সৈতে আহিব পাৰে তাৰ বিষয়েও আমি কেবিনেটত আলোচনা কৰোঁ আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক আমি উপযুক্ত নিৰ্দেশ দিওঁ। এতিয়া মই ডিব্ৰুগড়ৰ বিষয়ে কেইটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ, যিখিনি আজি কেবিনেটত আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া আমি এখন জিলাত যাওঁ, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সিদ্ধান্তৰ উপৰিও ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰো আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত লওঁ, যাতে জিলাখনৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশত আমি অলপ হ'লেও বৰঙণি যোগাব পাৰোঁ। আজি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ এটা স্থায়ী কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কাম কৰিব। আমাৰ যিটো CM ছেক্ৰেটেৰিয়েট থাকে দিছপুৰত, সেই CM ছেক্ৰেটেৰিয়েটটো জিলাৰ পৰাও, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰাও সি ফাংচনিং কৰিব। ৰিজাল্ট এইটোৱে হ'ব যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনো মাহত 2 দিন 3 দিন নিজৰ কাৰ্যালয়ত আহি বহিব লাগিব আৰু সেইটো এটা তেওঁৰে কাৰ্যালয় হ'ব। All right, now it's time for a very short break. Stay tuned. I'll be right back. Welcome back. You're watching News at 5, and now moving on to the big story from pole-bound Tripura. A massive show of strength by the BJP was witnessed in Agartala today as Chief Minister Manik Saha filed his nomination papers. Chief Minister Saha took part in a mega Rath Yatra flanked by NEDA convener Himanta Biswa Sharma and Manipur Chief Minister Ranbir Singh as he proceeded to file his nomination. A sea of BJP supporters also accompanied Saha as they made their way through the streets of Agartala in what was a massive show of strength for the BJP. The Rath Yatra started from Durga Bari, where Chief Minister Saha offered prayers along with NEDA convener Himanta Biswa Sharma and BJP's Northeast convener Sandeep Patra. And Northeast Live Chief of Bureau Arindam Das caught up exclusively with as Chief Minister Manik Saha after he filed his nomination. So, first reactions there from the Tripura Chief Minister. Listen in. We are joined in by Tripura Chief Minister, Dr. Manik Sir. Well, sir, you have been very confident right from the very beginning. What is the mantra of that confidence? Confidence is on the basis of our development. Our Justice Prime Minister always he thinks for development only, and he has already said that we have to act on east areas. Until and unless the east is developed, northeast is developed, the entire country cannot be developed, and he has showed it. So far, this airway and railway is concerned, internet is in every field he has developed it, and he has done it, and he wants to do more also.
And for the tribal people, he has very sympathy for the tribals people, and he wants that tribal people should uplifted. So in that direction we are doing. What is the number you are expecting, and whom do you think will be, More than 50. and whom will be your opponent? No, we have no opponent. Will Tripura Motha be a factor? No, we do not consider that there will be our challenge. Meanwhile, NEDA convener Himanta Biswa Sharma, who accompanied Tripura Chief Minister Manik Saha during nomination filing, stated that while the BJP has no opponent state-wise, there may be constituency-wise contests. Do you see the mood in Tripura this time? I think it is a festive mood. BJP is going to win hands down. Okay, what would be how would be the performance? How many seats are you expecting? I Both. think will improve than last year. What about Tripura Motha? Will it be a factor? I think definitely they are contesting. There will be a factor, but I don't think that electorally that they will gain that much. It was thought that there would be an alliance of Tripura Motha and BJP. It didn't happen. We always want to have a tie with tribal party, but at the same time we have to protect integrity of Tripura. We cannot agree that Tripura will be divided into two states. That we cannot agree. Whom do you think would be your main opponents? Whom do you think will be? I think it will be depend on constituency wise, but across the state we don't have any opponent. But yes, seat wise there will be opponent. You see, as I told you, Congress today doesn't represent the political landscape of nation. CPM is not there at all. So what will happen in the CPM and left unity, how they will react, it has no significance for BJP because they are not at all a relevant political factor. But the tribal unity has come. You see, there we wanted always to give a lot of empowerment to the tribal community. We are for tribal community, but at the same time, we cannot disturb the unity and integrity of Tripura. So that is a ideology for us that we cannot promote anyone who wants to divide Tripura. Sharma also predicted a big win for the BJP in the state. He also downplayed the Congress CPIM alliance, terming it as a big zero. मेरा लगता है कि लास्ट टाइम जितना हमारा सीट था उससे तो सेफ पास ज्यादा ही होगा कोई तो समस्या नहीं है माहौल इतना बढ़िया माहौल है सर 18 के मुकाबले 23 का माहौल कैसा लग रहा है आपको? पूरा 18 में भी अच्छा आप थे। देखिए 18 का माहौल डर का माहौल था आज शांति का माहौल है और शांति का माहौल में लोग ऐसा ही वोट देगा कि आगे भी शांति रहे और विकास भी हो तो इसलिए मेरा हिसाब से लास्ट टाइम से रिजल्ट अच्छा होगा बहुत बढ़िया होगा और कांग्रेस और सीपीएम का जो जोट हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? जीरो और जीरो मिलने से जीरो ही होता है उसमें चिंता का क्या बात है सर आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? बीजेपी देखिए देश भर में कांग्रेस जीरो है देश भर में सीपीएम जीरो है जीरो और जीरो मिलने से क्या होता है सर क्या लग रहा है बीजेपी अकेले सत्ता बना पाएगी या फिर गठबंधन? इस टाइम बीजेपी को अकेला सरकार बनाना है और देखिए हमने त्रिपुरा का यूनिटी के लिए हमने कुछ कदम उठाया कि हम अकेला लड़ेगा त्रिपुरा का यूनिटी रहे त्रिपुरा में विकास है रहे और त्रिपुरा में सबका अधिकार रहे ये सोच के हमने अकेला लेने का फैसला किया लेकिन आईपीएफटी हमारा हमेशा हमारा साथ होता है इस बार भी है लेकिन सरकार बीजेपी ही बनाएगा उसमें कोई डाउट नहीं The NEDA convener reiterated that the BJP will fight the polls on the development agenda. पहले तो आज अगर आप पहले अगरतला आते थे हर जगह में आपको लाल ऑफिस देखता था अभी तो कोई लाल ऑफिस नहीं है एकदम पूरा साफ है सरकारी कर्मचारी को पहले महिला संडा देना पड़ता था अभी संडा भी नहीं देना है तो इसीलिए सरकार का जो काम है उसको भी देख के वोट देगा साथ साथ में डॉक्टर मानिक साहा जी का जो चेहरा है उनको भी देख के लोग वोट देगा
और नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत को लिए, वो दिल में रखते हुए लोग बीजेपी को वोट करें। Sir, what is the card in which BJP is playing? Is it development? Only development. BJP believe only in development. That is the only card we have. We don't have card like donation card. We don't have extortion card. We don't have any card. We have only one card, that is called development. Meanwhile, Manipur Chief Minister Biren Singh, who accompanied Tripura Chief Minister Manik Saha during nomination filing, also predicted a big BJP win in Tripura. Atmosphere is very good. Definitely BJP will come back and the notice will be changed. And it's not just Chief Minister Manik Saha. Senior Congress leader Sudeep Roy Burman also submitted his nomination papers for the 6th Agartala Assembly seat today. The lone Congress MLA in Tripura, Sudeep Roy Burman, had successfully contested in the by-polls to the Agartala seat last year after quitting the BJP. Roy Burman is once again looking to hold on to his passion. We are joined in by Congress leader and candidate Sudeep Roy Burman. Well, how do you sense the mood this time? The mood of the people is very positive. They are waiting to exercise their franchise and waiting that democracy will prevail in the state of Tripura, which have been stolen away for the last 5 years. So they're waiting for that, and it's our duty to assure the people that New Dawn is waiting for them. In the seat sharing pact, it has been seen that the Congress didn't get much of the share. Someone or the other has to sacrifice. We thought that for us, our party's interest doesn't takes the first position or the first seat. The interest of the common people takes the first position. Is the theory, is the motto of our party. So for the greater interest of the people of the state, we took a back step. So whom do you think will be your main opponent, the Congress TMC? Whosoever is fighting against us will be our main opponent. Will Tipra Motha be a factor in this election? All political parties, they are factors. Obviously, the Promother is not exceptional, obviously. Have you also sacrificed one seat to Tipra Motha, it seems? Let's see. We told you now that we want that for the greater interest of the people of my state and the democracy to prevail, the rights of the people, as has been ensured in the Constitution of India, should very well be ensured for the sake of the people. So for them, whatever needs to be done, we told a few months ago, whatever needs to be done to restore democracy in our state, we'll be doing. Post-election, if situation arises for another alliance, with whom you go with? No, nobody is sent tomorrow. I'm dealing with the president. And Tipra Chief Pradut Debarma accompanied Swapna Debarma, the party's candidate from Mandwai constituency, for nomination filing. Tipra is contesting in as many as 42 seats. ये बात नहीं है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कितना मार्जिन से जीतेगा वही बात है। आने से हमारा जो डिमांड है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए हम लोग फाइट करेंगे, और उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड मिला तो डेवलपमेंट खुद आएगा, क्योंकि सब लोगों ने हमको कहा है कि डेवलपमेंट आएगा। 70 साल से जब तक हमने अपना डिमांड नहीं उठाया तो डेवलपमेंट के बारे में कोई नेशनल पार्टी ने बात नहीं किया। तो हम भी समझ चुके हैं कि जब तक हम उनको हिलाते नहीं हैं तब तक वो लोग हमारा बात नहीं करते हैं। तो वो आप देखेंगे क्या होने वाला है। And Tripura Pradesh Congress President Birajit Sinha, who is contesting from the Kela Seher seat in Unakoti district, also submitted his nomination papers today. কৈলাসরে যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মহাদিত্য উন্নকুটি, এটা ডেভেলপ আমরা করব যাতে সারা পৃথিবী থেকে, সারা দেশ থেকে মানুষ আসে। টুরিস্টের জন্য ট্যুরিজম আমরা করব বিশ্বনাগার, এবং কৈলাসরে একটা ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ স্থাপন করব। এবং আরেকটা চিন্তাধারা আছে যে রাজ্যের প্রত্যেকটা জেলায় একটা মেডিকেল কলেজ। অনেকে বলবেন কিভাবে করবেন, পন্ডিচেরি ছোট্ট রাজ্য, 9 লক্ষ জনসংখ্যা, এখানে 8টা মেডিকেল কলেজ আছে। সুতরাং আমাদের মেডিকেল কলেজ হলে এখানে মানুষের
চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত, কুটির শিল্পের জন্য ইন্ডাস্ট্রি লিস্ট তৈরি করা ইত্যাদি আমাদের পরিকল্পনা আছে। আমি বিশ্বাস রাখি কৈলাসহরের মানুষের এই ভরসা আছে আমার প্রতি, এবং আমারও অগাধ শ্রদ্ধা আছে কৈলাসহরের মানুষের প্রতি, সর্বধর্ম। And now it's time for a very short break. Stay tuned. I'll be right back. Welcome back. You're watching News at 5. And now, before moving on to some other stories, let's take a look at the headlines once again. Massive show of strength by BJP in Tripura as Chief Minister Manik Saha files nomination. Later convener Himanta Biswa Sharma accompanies Saha. No single opponent for BJP fight constituency level, says NEDA convener Sharma. BJP Parliamentary Board meet on Nagaland polls tomorrow. Party's candidate list to be finalized. BJP workers continue to demand more seats. And party hopping continues in Meghalaya despite release of candidate list. NPP's Rani Kaur candidate Martin M. Dango set to join BJP. And BJP adopts resolution to never ally with Nitish Kumar again.
And I want to a big story from poll-bound Meghalaya. There seems to be no end to party hopping in the state, even at the time when candidate lists have been declared by almost all parties. Senior NPP leader MM Dango, who is the party's candidate for Ranikor seat, is all set to join the BJP. A large number of supporters of Dango have already joined the Bharatiya Janata Party. We have reactions coming in from Meghalaya BJP leader Dipayan Chakraborty. Listen in. Can understand. I have just explained you since you are. I think you are late. I'm again telling that every citizen is started to understand that the Conrad Sangma government has failed miserably. People's expectations were not met in 5 years. After the misrule of Dr. Mukul Sangma and the Congress for last 45 years, much expectations were from the Conrad Sangma because he was expected to be a dynamic and an educated person, but he have failed miserably. So today, this Ranikor things have happened. Tomorrow, you or day after tomorrow, you may see more constituencies. People have started to move, and in democracy, when people starts to move, that means it is finished. If BJP gets 25, we are going to head the government. So that is also a speculation. So let us see. Uh, we are going to the people, so the people are going to give their verdict. See, in politics, today I cannot give this answer because it is after the people gives the verdict that calculation starts. So we have to see the better interest of the people. So once we go back, the people give us 36, 31 seats. So we do not need NPP. Moving on now. There seems to be no end to protests in Kohima as the protests by BJP workers of Kohima district unit continue to demand ticket for Kropol Vitsu. BJP workers are protesting outside the BJP head office in Kohima for the fourth straight day, demanding that BJP ticket for Kohima should be given only to Kropol Vitsu. Protesters once again appeal to the BJP not to allot ticket to NDPP candidates. From day one, with the Kohima district BJP, all the Karyakartas were one voice, and we are demanding only one ticket for the Kohima district, excluding Chemenyu. Kohima district were demanding only one ticket. And what our stand is that from day one, that ticket should be given to Mr. Propol, who was from 15 Sarun Angami too. Why? Because when everyone hesitated to join the BJP party, Mr. Propol has willingly accepted our request and he joined the party and with all his supporter, and he resigned from the NPF and he has joined the BJP party, and we have worked very hard for the party for the last since last year I should say, and now we have brought the party to a stage, to a level that we are sure to win there. So we request our leaders not to accept the others, I should say, the others partners, our partner, the NDPP. They should not fall to the trap of our partner NDPP and divert the BJP ticket. The 77 Trained Nurses Association of India National Conference, a two-day mega event of nursing professionals, is being hosted in Northeast for the very first time since the inception of the association in the year 1908. Well, the Vice President of TNAI Northeast, Cheryl Susan Tada Ni Carson Teo, spoke exclusively to Northeast Live in this regard. Listen in. We are proud of you. Principal of Nursing College. Trying to bring up the nursing profession in the state of Arunachal. This event is very important. It is a mega event because for the first time in the history of Trained Nurses Association of India, that all the 7 states and one brother state is hosting the event. So it is a very mega event. It is never done in the 113 years. It has never done by the associations. Without nurses, we cannot run the service, the health service we cannot run. And as we have heard,
Nurses are the heart of the hospital. Doctor will come for 10 minutes or 20 minutes or 5 minutes, but the nurses are 24 hours. 24 hours. So we want the government, not only the government of Northeast, but the government of India to invest in nursing. The conference saw participations of more than 2,000 delegates from various parts of the country, with scientific sessions and exhibition as its subparts. The conference provided a forum for dialogue, exchange of ideas and experiences among the participants. Moreover, veteran nurses from different states and union territories of the country were conferred with Lifetime Achievement Award for their utmost dedication in the field of nursing. To name a few, Dr. Jasbir Kaur from Punjab, Professor Amrita Lenka from Odisha, Professor Baby Ganesh Kulkarni from Karnataka, and Scarlett Pimpernel Sama from Meghalaya were some of the achievers today. Because of making maximum membership and providing dedicating services, I have been awarded today. Really, I'm very excited, not happy, I'm very excited, elated because of getting this award. And my only advice to the nursing field is you have to have 4 Ds, that is dedication, devotion, decision making, and duty conscious. How does it feel to be a nurse serving for the people? In 1974, and the coronary care unit was started there, and their first pacemaker was implanted to the patients, and then patient speaks and look at you with so much of desire and love and affection, and puts your hand like this, and they becomes happy, and that is the gift of God. And so we have to work with our utmost dedication and commitment. And if we bring smile on a patient face, that is the utmost gift of God. Notably, the Trained Nurses Association of India, founded in the year 1908, is the National Professional Association of Nurses in India and one of the largest and oldest professionals association of nurses globally. Meanwhile, we have reactions from Professor Kathleen McCourt, President of Commonwealth Nurse Midwives Federation. Listen in. I'm absolutely delighted to be here in Guwahati to celebrate with the Trained Nurses Association of India. I've been delighted to meet all of the nurses and hear about the work that they're doing post-pandemic. I think the nursing profession, well, nurses and midwives have been severely affected by the pandemic, but we will rally and be strong. We met with the students yesterday, and the students were very energetic and excited about the future. And we know that nurses from India are so well prepared and educated, and they are a delight to work with. Shifting focus now, as many as 75 students from Manipur are participating in the Student Experience and Interstate Living Annual Tour and a cultural exchange program organized by ABVP to promote the feeling of oneness among every student of India. Notably, the 75 students were selected from Manipur to mark 75 years of India's independence. The troop was flagged off for embarking on their journey to different states of India from Rani Gaidanliu Park at Mantripukhuri in Imphal today. Their first destination will be Guwahati, where students from Northeast will gather for the SAIL program that is set to commence from February 1st to February 20th. SAIL, also called a National Integration Year, was initiated with an aim to promote the feeling of brotherhood between youths from Northeast India and the rest of the nation. Speaking to Northeast Live, ABVP State Unit Secretary R.K. Ravichandra said that the students will be accommodated in local host families where they will be treated not as a guest but a member of the family. सिलतूर ये 1966 से हमारा जो पूर्व नागालैंड का गवर्नर लोग ने शुरू किया है, और वहाँ तब से लेकर अभी तक हर साल कर रहा है स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को हम बाकी भारत के स्टेट में यहाँ का लिविंग स्टाइल कैसे है, हमारा खान पान कैसे है, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहा है। ये सिलतूर 2 टाइप का होता है, एक वहाँ से बाहर जो दूसरे स्टेट से नॉर्थ ईस्ट में आता है, और नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट वहाँ जो बाकी स्टेट में जाता है। और इस बार हमारा जो 75 ईयर्स ऑफ अमृत महोत्सव का
एबीवीपी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। ये जो नॉर्थ ईस्ट से 500 स्टूडेंट बाकी स्टेट में लेके जा रहे हैं हम। तो मणिपुर से भी हम ट्राइबल स्टूडेंट्स और कुछ यहाँ का लोकल स्टूडेंट लेके जा रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट से हम ट्राइबल स्टूडेंट ही जा रहा है और इसमें हम अलग अलग स्टेट में राज्यों में जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हम 500 स्टूडेंट को 16 ग्रुप में बांटेंगे। 16 ग्रुप से हम हर स्टेट का स्टूडेंट रहेगा इसमें और हर स्टेट में हम 3 दिन 4 दिन का ऐसे स्टे रहेगा और कम से कम हम 5 स्टेट में जाएंगे। सभी जो स्टूडेंट हैं हम एक एक किसी के घर में रखेंगे, होम स्टे करेंगे। रिसेंटली जो 75 स्टूडेंट्स बाकी स्टेट से नॉर्थ ईस्ट में आया था और अलग अलग स्टेट में नॉर्थ ईस्ट का जो 7 स्टेट में गया है और यहाँ मणिपुर में भी 10 स्टूडेंट आया है और हम यहाँ पे जितना हमारा कल्चर वो सब सीख के चला गया है। And now it's time for a very short break. Stay tuned, I'll be right back. Welcome back. You're watching news at 5 and moving on now. Assam is all set to play host to G20 meetings from February 2nd. Hectic preparations are afoot at IIT Guwahati, which will be hosting the first U20 or Y20 Group Meet 2023. The Premier Educational Institute is slated to host 2 Y Series and 2 E Series meetings, respectively. The meetings will be hosted under the theme of India's G20 presidency, Vasudhaiva Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future, which affirms the value of all life possible. Representatives of 19 member countries and 16 invited countries will converge at IIT Guwahati for the key meetings. Meanwhile, IIT Guwahati, along with Kamrup District Administration, are engaged in hectic preparations to provide a warm reception to the G20 delegation when they arrive in Guwahati.
আইআইটি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগ কৰিছে আৰু আমি সম্পৰ্কত 2-3খন বৈঠক কৰিছোঁ, পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশটো তিনিতৰপীয়া হ'ব। তিনিতৰপীয়া নিৰাপত্তা ইয়াত থাকিব আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ 2টা ভেনু আছে। Meanwhile, 5 delegates have landed in Guwahati today ahead of the meet at IIT Guwahati. The delegates include Dr. Rafael Del Villar, Director of Mexico Central Bank, Prasad Ananthakrishnan, Advisor and Unit Chief, Climate Finance Policy Unit at IMF, Robert Sample, Director General of Canada, Dan Novak of Canada Central Bank, and George Carrera, Board Member of Argentina Central Bank. Shifting focus now. Amid the massive success of Pathaan, superstar Shah Rukh Khan, along with his co-actors Deepika Padukone and John Abraham, are holding a press conference. So let's cut across live there. मेरे करियर में जब मैं actually nervous था, I think Gauri had asked me the question 2-3 days before the release that आपको नींद आती है रिलीज से पहले? तो मुझे बहुत अच्छी आती है। अच्छा। और मैं आराम से उठता हूँ और हर पिक्चर में गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए गेटी 12 बजे के शो पे, और मैं हमेशा 11:45 बजे उठा हूँ हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी। इस टाइम हम लोग साथ में थे आई थिंक 3 बजे तक, 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं। और क्योंकि उसका एक रीजन और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था। तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज हो रही थी सुबह, तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक 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 शुरू हो गई थी। एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी। तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई। एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा। पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते हैं तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है। बस गाने भी गाते हैं बहुत। हाँ, गाने भी गाते हैं। हैं। तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ। ये इनको बोलो वादा करने को। मुझे इसने ना सुबह 6:30 बजे फोन किया, मैंने किया एक्चुअली 6:30। Okay. मैं भी उठ गया। तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो। इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे। नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा मैं। तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी, मैं हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली। और मैं सबके बिहाफ पे कहूंगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट सunk in। अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का। वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, all the media, and also I would like to say the powers that be, because there were times when we had to make calls to people and say कि please हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें, and they all took charge of it, and we were so happy that the film was released with so much। मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें। हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चिल्ला, मेरे को लगता है 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी, बट स्टिल it should not hurt anyone, it should not disturb anyone, because film watching, film making, film experience is an experience of love, and we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world, because film का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज होती है यार। एक्चुअली फिल्म में कुछ बड़ी चीज नहीं है, एंटरटेनमेंट है, खुशी का एक जरिया है। So if it can just come out with love and people enjoy it with love, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, हर तरह की चीजें आती हैं अच्छी और बुरी, but I think there should be a lot of happiness and love when parents, children, families go to watch films in cinema theaters. Boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters, they should just feel happy that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice, and I'm so happy it's happened. I love you too. मैं भी शुरू कर रहा हूँ डेटिंग सर्विसेज के बाद। नेक्स्ट वीकेंड से सब अपने टेलीफोन नंबर भेज देना, अभी देना। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू।
सिर्फ प्यार देना, प्यार देना. शाहरुख से Moving on now. Well, the wait is almost over. Music maestro A.R. Rahman's mega concert is now only 1 day away. The A.R. Rahman concert for peace is all set to enthrall the Northeast on February 1st. A.R. Rahman will be arriving in Guwahati tomorrow morning, following which he will be rehearsing with his troupe consisting of acclaimed musicians. On the other hand, preparations are underway on a war footing at the Barsapara Stadium, the venue for Eastern India's biggest musical extravaganza. All right, viewers, so the wait is almost over. A.R. Rahman's mega concert is now only 1 day away. The A.R. Rahman concert for peace is all set to enthrall the Northeast on February 1st. A.R. Rahman will be arriving in Guwahati tomorrow morning, following which he will be rehearsing with his troupe consisting of acclaimed musicians. On the other hand, preparations are underway on a war footing at the Barsapara Stadium, the venue for Eastern India's biggest musical extravaganza. Moving on now. Rahul Gandhi concluded his 4,000-kilometer Bharat Jodo Yatra today. The 5-month-long march began in Kanyakumari in the southern state of Tamil Nadu and finished in Srinagar, the capital of Jammu and Kashmir. Meanwhile, speaking at the PCC office in Srinagar, Congress leader Rahul Gandhi said that he was warned that he might be attacked in Kashmir, but people here did not give him hand grenades but hearts full of love. He added that BJP members could not work like this in Jammu and Kashmir because they are scared. He was wearing a traditional Kashmiri pehran to mark the occasion. और जो भारत जोड़ो यात्रा लेके कन्याकुमारी से यहाँ तक 4,000 किलोमीटर चल के आए जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी आपने देखा आपको मालूम है नहीं उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी मुझसे मिलकर रो रही थी मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है उनको किसी ने मोलेस्ट किया है उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलिस को बताऊं तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए हमारा और भी नुकसान हो जाएगा तो ये हमारी देश की सच्चाई है ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूँ तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए When news and updates continue on Northeast Live, stay tuned for more news. Thanks for watching.